students, today I will discuss with you book exercise of chapter number 6, allergy of class 7th. So starting with the filling the blanks, and dash is unusual reaction to a particular substance. So कोई reaction जो unusual होती है that is known as allergy. The substances that causes allergies are called allergens. तो जो substances के साथ allergy होती है we call them allergens. Then pollen, pet dander and smoke, you know that all these are present in the air, so they cause the allergy, and these allergens are the airborne allergens. Then dash are the itchy red swollen spots on the skin, hives. Dash is a life threatening reaction to allergens, तो बहुत ज़्यादा जो serious होती है that is anaphylaxis. Natural rubber is an example of contact allergen, तो कॉन्टैक्ट में आते तो एलर्जी करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ एलर्जी, वन इज़ द सीजनल जो एक सीजन में पर्टिकुलर सीजन में होती है, अनदर वन इज़ द पेरिनियल दैट इज़ ईयर राउंड. एंड डैश टेस्ट आर कैरिड आउट टू टेस्ट फॉर सेंसिटिविटी टू एलर्जन. सो यहाँ पर टेस्ट लिखा है, यू शुड मेंशन टू टेस्ट, वन इज़ द स्किन prick test and other is the blood test, or the patch test is also one of the examples. Now coming to the choose the correct option. Perfumes are airborne allergens, and because we are directly applying to the on the clothes, so they are the airborne allergens. Dust mite and cockroaches, they trigger allergies throughout the how they do the allergy. They can either through their saliva or their skin shedding of their exoskeleton or through their feces. So all of these is the answer. Then airborne allergens causes, they can cause sneezing, swollen eyes and running nose also. So the this is option is all of these. Then coming to the fourth one, contact with a stinging nettle causes hives. Which of the following is not true? So कौन सा false है जो true नहीं है? फर्स्ट इज पेंसिलिन कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, तो कई लोग होते हैं जिनको पेंसिलिन से भी एलर्जी होती है, दिस इज ट्रू. नेचुरल रबर प्रोडक्ट्स डू नॉट कॉज एलर्जी, नो दे आर कॉजिंग दे आर द कॉन्टैक्ट एलर्जेंस, सो दे डू कॉज द एलर्जी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देन देयर वॉज अ इंसेक्ट स्टिंग एलर्जीज आर ट्रिगर्ड बाय इंसेक्ट वेनम, जो उनका जो जहर होता है उसके साथ होती है, येस दैट इज़ ट्रू. स्ट्रॉन्ग सनलाइट कैन कॉज एन इची रेड hives or rashes, that is true. Whenever you go in the sun, they also cause allergy. Then the sixth one, allergens that cause seasonal allergies are mostly airborne. So through the air we are getting the seasonal allergies. The best way to prevent an allergy, how we can prevent an allergy, best way जो है सबसे अच्छा, that is to avoid of allergens. अगर आपको धूप से है तो धूप में मत जाओ, किसी फूड प्रोडक्ट से है तो don't take those food products. So better to avoid the allergens from which the allergy is caused. This is the best way. Then we are coming to the true and the false, and you are going, if the statement is false then you are going to write correct that statement, rewrite that statement. Now here, an allergy is a communicable disease, so this is false. communicable होता है जो एक दूसरे से हो जाती है, no, allergy is non communicable disease, you will correct it like this. Then pet dander is a common airborne allergen, true, जो pet से एलर्जी होती है. कॉकरोचेस डू नॉट कॉज एलर्जी, नो, अभी हमने पढ़ा कि कॉकरोचेस जो होते हैं अपने सलाइवा से, एक्सोस्केलेटन और फीसेस से एलर्जी कॉज करते हैं, सो दिस इज़ फॉल्स. कॉकरोचेस कैन कॉज एलर्जीज, ठीक है, इसका डू नॉट कट कर देना. मिल्क, एग्स एंड सोया एलर्जीज इन चिल्ड्रन मे डिसअपियर व्हेन दे ग्रो ओल्डर, ट्रू. तो छोटे बच्चों को कई बार एलर्जी होती है इन चीज़ों से, लेकिन धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो उनकी एलर्जी ठीक हो जाती है. वॉमिटिंग्स एंड डायरिया कॉमन कॉजेज ऑफ स्किन एलर्जीज, फॉल्स. तो वॉमिटिंग्स एंड डायरिया ड्यू टू द स्टमक जो इन्फेक्शन होती है उसके कारण होती है. अ सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर मे अकर इन एनाफिलेक्टिक reaction, that is true. So a certain drop of blood pressure is there. Airborne allergens do not cause skin allergies, false.
they cause skin. Do not, you will cut and you will write they cause skin allergy. Hay fever is a perennial allergy. No, it is a seasonal one. So this is false. Allergies due to dust smoke may increase in winters. True. So the air becomes heavy and smog is formed. So that is breathing problems occur in those conditions. So this is true. Dust might feed on dead skin. Again, this is true. So these were the true and false. Coming to the match the column. So first is spores. इसका आंसर है एयर बॉर्न एलर्जेंस. सो दे आर प्रेजेंट इन द एयर. देन वी हैव द एस्प्रिन दैट इज अ medicine or drug you can say. So option is may trigger drug allergy. Then eczema, that is related with the skin. We are having itchy scaly rash. Then red itchy watery eyes, that is we know that is due to the seasonal allergic conjunctivitis. ठीक है, तो इसके कारण होती है. देन nuts they are the food allergens. Then asthma, that you know that breathing problem is there, so there is tightening of the airways. So tight हो जाते हैं, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है. Then sensitivity to sunlight, so it may, इसका ऑप्शन है may be increased by certain medicines and ointments. ठीक है, अगर लगा कर जाओगे बाहर ointments, that will increase the allergic reactions in the sunlight. Mask and goggles, and the option is it protect you from the dust and the pollen. So protection from dust and the pollen. So these were the this was the book exercise of chapter number 6. Hope you understood and do correctly in your books. Thank you.